सो हाय गाइस, वेलकम टू वुडमैन अगेन एंड आज हमारे साथ हैं सर, आपका गुड नाम? प्रभजोत। प्रभजोत। सो प्रभजोत जी हमारे साथ हैं आज एंड इन्होंने अपनी ब्रांड न्यू ब्रेजा के अंदर ब्रांड न्यू X9 लगवाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो प्रभजोत जी, मेरे को पहले आप ये बताइए कि आपको वुडमैन के बारे में पता कैसे चला? मैंने एक्चुअली इंटरनेट ब्राउज कर रहा था, मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था कौन सा म्यूज़िक सिस्टम सबसे अच्छा होता है। तो मैंने देखा कि वुडमैन एक इंडिया का ब्रांड है और बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज्ड है अपनी वारंटी और सर्विस के लिए। ठीक है। तो मैं सीधा फिर यहीं पे आ गया ब्रेजा को लेकर के। ठीक है। सो आपने और भी स्टीरियोज देखे होंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप इंटरनेट सर्च पे थे। आप मार्केट में काफ़ी सारे लोकल स्टीरियोज आते हैं, मुझे लोकल स्टीरियो लगवाना नहीं था, मैं ब्रांड वारंटी के पीछे भी गया, इसलिए मैंने वुडमैन प्रेफर किया है। सो अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे कि अभी आपने देख ही लिया होगा स्टीरियो। एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट फैंटास्टिक। एक बार मैंने अभी यूज़ किया था, इट इज़ क्वाइट लैग फ्री एंड बाकी सारी चीज़ें मैं अगर ऑपरेट करना चाहूँ तो ऑन अ सिंगल क्लिक मैं बहुत कुछ मेरे इस पे है, कंट्रोल में है अब, ऐसा लग रहा है। और कार काफ़ी ज़्यादा पहले से सूदिंग लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। सो मतलब क्या ये सकते हैं कि हम आप खुश हो काफ़ी यस वुडमैन के साथ जाके? यस यस। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, so हमारी ब्रीजा में लग चुका है X9 guys. Let's see what feature we have. So firstly you can see the interface and it is pretty much customizable. You can change any color if you want to. You can go to the theme editor. You can choose any color, if you want like blue or red or purple, like whatever, but we'll just go with the orange, which is the actual theme of Woodman, right? And basically let's check out some apps, what apps we will be getting while we install X9. And like personally I really like the app, it's called split screen. You can split the screen while you are like driving and watching YouTube at the same time. So first we're gonna see the navigation, which is like voice command. You can just ask anywhere to go. Take me to Hoskas. Guys, you can see the speed. This is like pretty much nice. It also depends on the carrier you are actually having in your phone. If you have 5G, it will support 5G and it will like work pretty much faster than that. So yeah, you can see it's very nice. So you don't need any additional phone to connect or to put it on the dashboard if you want to do the navigation thing. Okay guys, so the last feature we're going to be talking about is the YouTube. Okay, so YouTube is here and let's check out the quality, what quality we'll get while we are like driving and watching our videos. I would just suggest you to be safe while you drive and watch. Do not distract yourself too much. इसमें स्पीकर्स नहीं है? अच्छा, स्पीकर्स नहीं है। ओके चलो ठीक है। तो ओके, सो गाइज हमारे पास अभी स्पीकर नहीं है, बट यू कैन सी द क्वालिटी. Is it like clear or like what? You can pretty much see. We'll just change the quality to 1080 pixels.